the next thing that comes up is that what are the progresses made under IBC? Insolvency and Bankruptcy Act के passage होने के बाद, Insolvency and Bankruptcy Act के pass करने के बाद क्या-क्या benefits मिले? तो पहला, ease of doing business improves because of facilitating the process of exit. You know, ease of doing business improves because of process of facilitating exit. तो एक तो हमने exit process को facilitate किया, ease of doing business improve किया, क्योंकि firms के लिए uncertainty कम की. If the exit laws are good, then the firms have a much better position for themselves. Then of course there was behavioral change, that is business relationships are recoded. Firms start avoiding willful default and it helps the banks to remain robust. Firms start avoiding willful default and it helps the banks to remain robust. You know, that is the idea कि firms जो हैं वो willful default, ये है recoding business relationships कि अब नए सिरे से business relationships बनने लगे हैं, firm avoid नहीं करते, अब default करना avoid करते हैं, banks को भरोसा बढ़ गया है और firms का आपस में भरोसा बढ़ गया है. The firms trust each other better for growth in this sector. Other benefits are that 69% of distressed assets are rescued and realization of value around 178% of the liquidation value. जितनी वैल्यू लगाई गई थी कि अगर कंपनी को लिक्विडेट करेंगे तो पैसे मिलेंगे, उससे 178% ज़्यादा मिले, ये एक अचीवमेंट है. और 69% हमारा डिस्ट्रेस्ड एसेट रेस्क्यू के कर लिए गए हैं, ये एक अचीवमेंट है. 100 rupees were lost, the 69 rupees have been rescued one way or the other. And 92% values have been realized under liquidation process. इसमें एक चीज़ है, 33% of default has been recovered but the number is low because many of these loans are very old loans. So 33% of default has been resolved, but the number is low because many of these loans are very old loans. तो old loans होने की वजह से क्या था? The collateral value had become minuscule. तो इनकी रिकवरी बहुत मुश्किल थी. इनके जो collateral थे वो भी अब हालत खराब थी उनकी. लोन्स 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, तो इनकी रिकवरी 5% हुई, 4% हुई. इसीलिए एवरेज जो है वो 33% है. रिटर्न ऑन असेट मीन्स द प्रॉफिट यू अर्न compared to the asset that you have invested. All right. Then IBC has recovered the highest amount for scheduled commercial bank. जितने भी रूल बने थे आज तक, ये 33% is quite a record breaking number if you ask me. आज तक इंडिया कभी भी 13% से ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता था, सारफेसी के बाद भी. और एक ज़माना तो ऐसा था कि 8 से 10 साल लगते थे रिकवरी में. आईबीसी ने क्या किया? एक तो 33% रिकवरी ऑलरेडी हो गई, जबकि मैंने आपको बताया ये दिक्कत है कि ओल्ड लोन्स को रिकवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोलैटरल की भी हालत खराब है. दूसरा, द टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर आईबीसी टाइम पीरियड हैज नाउ कम टू लेस देन 2 years एज रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं कि ये 530 दिनों का नॉर्मल एवरेज टाइम है रिकवरी का. तो 530 दिनों का मतलब अब 2 साल से भी कम हो गया रिकवरी का टाइम, रिजोल्यूशन का टाइम, आई एम सॉरी. So the time period for resolution of loan, which used to be 8 years to 10 years in India, is now around 2 months odd, the 1.5 year odd in India. It's a big achievement. Other good achievement is this is rising. This is showing a positive trend. So we can hope that in future we can do better.